Namaskaram. Hello. I said Namaskaram. Okay, let's begin this discussion. This is going to be very interesting. तो हम लोग बाद में इसको समझाएंगे लास्ट में क्या हो रहा है इसमें, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं. With the first. This is not news hour, okay? When I'm telling you an answer, you can't ask me another question. You're making a cardinal mistake, Sadhguru. You have यूजुअली अर्नब के साथ ऐसा नहीं होता है. a different package here. So it's okay to have fear, it's okay to be insecure. These are the four things, Sadhguru, that we are told to get rid of. Who is your guru? Whose? Why should I reveal? If I give you tools for transformation, the only thing is to learn to use the tools, that's all. You know, when my daughter was just 3.5 months old, she was traveling with me. One hand on her and my right leg is always full down, and I drove across the country and she grew up like this with me till she's 5, till she went to school. Every day we are in a different home, staying with all kinds of people, everybody wants to teach her something. I said, one rule is nobody will teach her anything. No ABC, no 1, 2, 3, no Mary had a little lamb, because I don't care whether Mary had a lamb or not. So you won't believe, nobody taught her anything. By the time she's 18 months, she fluently speaks 3 languages because she's all ears, because nobody talks to her. She just grasps everything around her because nobody is teaching her anything. And she grew up like this, and when she was 12, 13 years of age, one day she came up to me. She just came back from school, disturbed about something there. And she said, you're teaching everybody so many things, you're not telling me anything. I said, well, I don't do anything unsolicited. Here you come now, let's see. So this is all you need to know. So what I want to know is how human you are. Let me tell you, this is how I haven't human finished I am. my question. No. I want to know how human you are, Sadhguru. Because, and the reason I'm asking you this is because very often we want to be guided by people who we feel have transcended. सो द मेजर एम अभी हम लोग का ये है कि हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? क्योंकि जो आंसर दिया जाता है वो कहीं ना कहीं उतना सफिशिएंट नहीं होता यूजुअल लोगों को समझने के लिए. सुपरफिशियली तो समझ में आता है, लेकिन डेप्थ में हम लोग जाएंगे. तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट चाहिए और या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं. The insecurities of humanity. So I want to know whether you're scared of something. तो यहाँ पर क्वेश्चन मेन ये है कि आपको किस चीज़ का डर है, ठीक है? अब एक्चुअली हम लोग पहले आंसर सुनते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. I want to know whether you experience fear, and I would also like to know whether you have attachments. Can we start with the first? Let me finish this. This is not news hour, okay? When I'm telling you an answer, you can't ask me another question. I'll get back. I'll get back. And we're not yet in Republic either. You're making a cardinal mistake, Sadhguru. In 2014, I met a young man called Rahul Gandhi. Oh. I don't know why anyone's laughing again. Oh. He too interrupted me like you did. I got back later. Please continue. But you'll have to answer my question later. Please go ahead. You have a different package here. So, I will come to that. I'm very much going towards that. So the girl comes to me and says this, then I say, see, this is all you have to know. Never look up to anybody. She looks at me, what about you, kind of thing. I said, not even me. Never look up to anybody. Never look down on anybody. This is all the teaching. If you don't look up to anything, if you don't look down on anything, you will see everything just the way it is.
If you see everything just the way it is, you will navigate your life effortlessly. That's all it takes. Now, how human am I? You just now use the word human, and almost everybody, everywhere I go, they use the word human, always referring to the limitations of being human, never talking about the immensity of being human. Oh, I'm only human. But why are you not saying, I'm human? You're on top, you're the top species on the planet. You're supposed to be on the top of the pile of all the species. Why people are saying, I'm only human is because they're suffering themselves like no other creature. Not an ant or an elephant suffers themselves as human beings do. If their stomach is full, they're fine. For a human being, stomach empty, only one problem, stomach full, 100 problems. The reason is this is an evolutionary thing. It's an evolutionary thing that what you call as your cerebral flower, this brain, is new to you. You know, in the evolutionary scale of things, it is a new happening, this intellect. And most people have not figured how to handle it. They're not suffering the world, they're suffering their own thought and emotion most of the time. Why is it? Your education systems did not even teach you how to handle your thought, how to handle your emotion. Now, the moment you say you're human or not, first thing, the next question somebody will ask is, can I pull a gold chain from thin air? Can I do something else? Or can I pull out a rabbit from the vessel? Or can I pull a pigeon out of my pocket? If I pull a pigeon out of my pocket, what will you have? You will have a bird, I'll have a shitty pocket. This is not going to change anybody's lives. I will show you a miracle. I will show you people who are full-on activity, not people who are sitting in some cave. Full-on activity, all right? 20 hours a day, 7 days of the week, we're all on. I'll show you people for 5, 10, 15 years, they've not had a moment of anger, agitation, irritation, nothing, they live joyfully, blissfully. This is the miracle the world wants. This is the miracle the humanity needs. If this happens to you, you will not refer to human as a limitation, you will talk about human as a huge possibility. My question was about whether you need to transcend a few things. I personally think it's all right. It's good to feel fear, it's good to have insecurities, it's good to be attached. But what we are constantly told is to be guilty about fear, to be worried about expressing or being open about… That's multiplying the problem. Now you have fear and now you have guilt. Sadhguru, I listen to you. I still watch News Hour, so what can I do? This doesn't usually happen to me. But Rotary Club, well, okay, so you made me forget my question. My point was that we are constantly told to be embarrassed about our insecurities, right? We are told not to have attachments. We are constantly told that in our lives and in our own Hindu philosophies and other philosophies to lose attachments. I want to know why this is necessary, which is why I asked you, because you were described as an enlightened soul, which I know you are. I asked you whether an enlightened soul like you feels insecurity, experiences attachment. See, why this has come up is because people have a selective sense of involvement. This is what I said when I said, do not look up to anything, do not look down on anything. This is because if you look up to something, you will exaggerate. If you look down on something, you will exaggerate the negative. The moment you look up to something, you will get attached to it. The moment you look down on something, you will get dejected by it in some way, disgust will come. So these emotions of fear, insecurity, attachment, detachment, everything is a consequence. Shall we handle the source or shall we handle the consequence? People are always busy handling the consequence. They're telling you,
Trim your fear, can you trim it? No way is it going to work. Now you're flipping on the other side and saying, we need not be ashamed of it, let's have it. Is it a pleasant experience, I'm asking? Is fear, insecurity, guilt, whatever, is it a pleasant experience? If it's a pleasant experience, keep it, it's up to you. If it's an unpleasant experience, is it a choice? I'm asking you just this much. In the world around us, what happens? It's a different issue. World will never happen 100% the way you want it. Even if you're just two people in the family, still it doesn't happen 100% the way you want it. If it's 51% your way, you are the boss, okay? More than that won't happen. But what happens within you must happen your way, isn't it? If what happens within you happened your way, would you keep this blissful or would you keep this fearful or miserable or whatever? You wouldn't do that to yourself, isn't it? At least for yourself, you want the highest level of pleasantness. Though what you want for your neighbor may be debatable, but what you want for yourself is very clear, isn't it? So it's okay to have fear, it's okay to be insecure? No, I didn't say that. It's okay to be attached? I'm asking you… एक्चुअली इनका क्वेश्चन, एक्चुअली अर्नब का क्वेश्चन भी बहुत ही टू द पॉइंट है। इनलाइटन सोल को डर लगता है कि नहीं, बस यही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब 99% लोग व्यूअर को ये समझ में लग रहा होगा कि सदगुरु जी क्या कर रहे हैं, ये आंसर का जवाब सीधा सीधी क्यों नहीं देते, घुमा घुमा। अब आप अगर ब्रिटिश ये जो पीएम जो है ऋषि सुनक, अगर उनका अगर आपने पार्लियामेंट का डिस्कशन अगर सुना होगा, नहीं सुना होगा आप सुन सकते हैं, कितना घुमा घुमा के लंबा लंबा क्वेश्चन पूछता है उनको आदमी लोग, लेकिन वो बस 2 शब्द में जवाब देते हैं, बस 2 शब्द में, 2-3 शब्द में ख़त्म करते हैं। माने इतना शॉर्ट सेंटेंस में इतना क्विक एक्टिंग आंसर मैंने किसी का भी नहीं देखा। लेकिन अभी गुरु जी का आंसर क्यों ऐसा होता है, उसका डेप्थ में समझना है, क्योंकि वो सुपरफिशियल बेस से आंसर देते ही नहीं, वो डीपर रेलेवेंस। क्योंकि अगर मान लीजिए इनको पता होता है इनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है। क्योंकि इनलाइटनमेंट का एक दृश्य तो ये है कि वो आदमी अपने आप को एक्सपीरियंस करता है किसी हद तक। जब वो अपने आप को एक्सपीरियंस करता है तो उसको क्लियरली डिफरेंस होता है कि उसका माइंड क्या, उसका बॉडी क्या है, ठीक है। जब तक ये डिफरेंस आदमी के अंदर में एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक वो एनलाइटमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब उनको पता है कि माइंड एक स्मॉल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ये फियर, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सब माइंड का चक्कर है भाई। जब आप इस चक्कर में आप है ही नहीं तब तो ये क्वेश्चन तो वैलिड ही नहीं होता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो अभी इसीलिए गुरुजी ने बार बार कहा कि नो यू डोंट नो, यू आर एन एनलाइटन सोल बोला गया, लेकिन गुरुजी ने क्या कहा, तुमको पता नहीं। क्योंकि अगर आपको इस चीज़ के बारे में और डेप्थ में पता होता है, डिटेल में, सुपरफिशियल आइडिया है आदमी लोगों को, इनको ही नहीं, ज़्यादा जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो लोग एजुकेशन लिए, लेकिन अंदर आत्मा का एजुकेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है कि हम लोग को और डेप्थ में देखना ज़रूरी है। अब और सुनते हैं गुरुजी क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। If you had a choice… And what about ego, Sadhguru? Fear, insecurity, attachment and ego. These are the 4 things, Sadhguru, that we are told to get. और दूसरा चीज आप गुरुजी का एक्सप्रेशन देखिए क्योंकि जिसको ये सब चीज़ के बारे में पता होता है ना, तो अब वो ये सोच रहे होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, वो भी ये सोच रहे होंगे कि इतना मज़ा आता है ना इनका डिस्कशन सुनने में और उनको इस चीज़ को डिस्क्राइब करने में, कि इनको अब ये सोच रहे हैं कि अब इसको मैं कैसे जोक्स में बनाऊँ, ठीक है। गुरुजी का एक चीज़ है, अगर आपने पुराना कहानी वगैरह सुना होगा तो उसमें वो क्लियरली बोल देते हैं कि कोई आपको पत्थर दे रहा है ना, तो उसको आपको फूल बना के देना है, ठीक है। बस यही चीज़ हम लोगों को सीखना है कि कोई एक गंदा
टेस्ट दे रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो उसको कैसे आप उसको फूल बना सकते हैं? तो ये पॉसिबिलिटी गुरुजी ने हम लोगों में भी देखा। ये नहीं देखा कि इससे नहीं हो सकता, उससे नहीं हो सकता है। उन्होंने देखा कि मेरे सामने आसपास जो भी है वो सब पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग ठीक से हैंडल कर दें तो सब लोग फ्लावर की तरह साइन करेगा, है ना। तो यही इस पृथ्वी में बस यही एक दिन है, ठीक है। और बाकी सब आप देख रहे हैं डेवलपमेंट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, एक्सपीरियंसली एकदम सब लोग टॉर्चरस लाइफ जी रहे हैं, एक्सेप्ट जो गुरुजी के साथ एसोसिएट या फिर जो ओरिजिनली ये स्पिरिचुअल है। मैंने एक एक्सेप्शनल, मैं 100% नहीं दूंगा कि यही क्रेडिट है, उन्हीं को क्रेडिट, लेकिन जो भी सत्य के रास्ते में है उन लोगों को कहीं ना कहीं सफ़रिंग कम होगा, क्योंकि सत्य ही सफ़रिंग को कम कर सकता है, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन गुरुजी का रास्ता क्या है ना, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाइड है। तो अभी ये सोच रहे होंगे कि भाई अब ये तो आ रहा है 3-4 बार क्वेश्चन, अब इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब ये थॉट प्रोसेस को हम लोग पकड़ रहे हैं, rid of. क्योंकि हम लोग बहुत स्लो मोशन में देख रहे हैं, समझे ना। Over a period of time, we are told that as you grow older and you learn more in life, you must learn to give Who is away your all guru? four. Pardon me? Who is your guru? Who's? Why should? एग्जैक्टली वही हुआ। मुझे लग रहा था कि कैसे इस चीज़ को वो लाफ्टर में चेंज कर देंगे, और सारा ऑडियंस हंसने लग गया, है ना। तो मैंने कैसा भी पिच कर दीजिए। Why should I reveal? No, but this is a fact. This is what we are told. Is it necessarily the truth? Let's go one at a time. The ego. Everybody is talking about this. Right now, in any human being for that matter, if they do something wonderful, they'll say, I did it. If they do something nasty, it was my ego. So, Mr. Ego is a fall guy. Whenever you turn nasty, he's always there. But when you do good things, it's of course you, isn't it? I'm saying, let's become straight with life. That sometimes you're wonderful, sometimes you're nasty, sometimes you're joyful, sometimes you're miserable. This is your reality right now. You don't need a fall guy. This much sincerity we must bring into our lives, that what happens from within me is me and nobody else but me. If you come to this much, now if you see you're fearful or you're miserable or you're frustrated or you're depressed, if you see it's all because of me, would you not want to change it? Would you not want to change it? 100%. Now, I want to change it, how? Now you're asking for tools. That is why I'm here just giving you tools for transformation. Because tools are important in human life. As human beings, we are dominating the planet only because of our ability to use… एक सेकेंड, फियर, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ठीक है, ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि अब ये क्वेश्चन लगता है पास हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं होता है, ठीक है। होता है कि नहीं, इन्होंने पूछा है, एक्चुअली ये नहीं होता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर होना चाहिए तो वो इनलाइटनमेंट से अलग चीज़ हो जाएगा। एक्चुअली अब देखा जाए कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जरूर होता है, ठीक है, लेकिन फियर नहीं है। फियर माइंड का खेल है, ठीक है, और वो एक इमेजिनेशन है। तो इसीलिए गुरुजी को अगर ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद दूसरे सेक्शन में, तो उन्होंने बताया था कि वो एक इमेजिनेशन, वो तुमने खुद से बनाया है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एंगर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये तुम बनाओगे तब जाकर बनेगा ना। अगर मैं बनाऊंगा ही नहीं, है ना, तो कैसे एग्जिस्ट करेगा वो। ये दूसरा बात है कि सब लोग बना रहे हैं, है ना, और उस डर की वजह से, उस इमेजिनेशन की वजह से, कल मैं काला हो जाऊंगा, अब देखिए, ठीक है, उस इमेजिनेशन आज कितना फेयर एंड लवली लगाता है आदमी लोग, है ना। तो वो एक फियर प्रोपेल करता है मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर फियर नहीं रहेगा, जैसे कि आपको स्कूल भर्ती होने का फियर नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो ये सब चीज़ का अगर डर नहीं रहेगा तो आप तो सुबह तो उठोगे भी नहीं, ठीक है। तो मैच्योरिटी चाहिए होता है इस चीज़ को समझने के लिए। तो आप अगर ये बोल रहे हैं आप फियर और इनसिक्योरिटी है ही नहीं, तो ये क्यों एक्टिव है भाई, ये तो सो जाते दिन भर रात भर। मोस्ट ऑफ द
इनलाइटन पीपल में क्या होता है ना, वो लोग अलग से आइसोलेट हो जाते हैं। उन लोगों को जब पता चल जाता है कि ये सब चीज़ सब माया मोह है, तो वो लोग आइसोलेट हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कंपैशन भी होता है, जिससे आपको लगता है कि मेरे वजह से अगर इन लोगों को थोड़ा, अब जैसे मान लीजिए गुरु जी ध्यान रहेगा बना के एग्ज़िट कर लेते, लो ठीक है, हम लोग तो काफ़ी मिजरेबल होता है, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअल एसेंस ऑफ लाइफ के बारे में पता नहीं चलता है, गुरु जी की टीचिंग के बारे में नहीं चलता। तो उन्होंने ये देखा कि मेरी ज़रूरत है अभी, ठीक है, तो ये आके हम लोग सह रहे हैं, सह रहे हैं नहीं, हम लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करें। तो ये दूसरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये डर के मारे नहीं कि कल उनका जॉब चला जाएगा। देख रहे हैं ना, उनका बेसिकली जितना भी आंसर होता है नॉन फियरफुल होता है, आप अगर ठीक से देखें, क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अटैचमेंट डिटैचमेंट के बाद, अब अटैचमेंट का बात क्या हो रहा है, अटैचमेंट का मतलब ये हो रहा है कि अब जैसे यहाँ पर बताया गया है, डज ही हैव अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट है कि नहीं। अगर आप सबके साथ इक्वली इन्वॉल्व हैं तो अटैचमेंट का बात नहीं आता है, ठीक है। आप सिर्फ एक ही आदमी के साथ इन्वॉल्व है तभी अटैचमेंट का। जैसे अब मान लीजिए वो सिर्फ अपने बेटी के साथ अटैच्ड है, उसी के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो अपना है, ठीक है, तो वो आपको बाहर निकलने में नहीं देगा ना, बात समझ। लेकिन आप अगर इन्वॉल्वमेंट सबके साथ एक ही जगह, ये यानी कि ग्रास होवर को भी इक्वल अटेंशन देना है, ठीक है। तो अगर आपका अटेंशन ऐसा हो जाता है जहाँ पर आप सबको इक्वल इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप सब चीज़ से अटैच्ड हो, समझ रहे हैं ना, आप सब चीज़ से अटैच हो, माने किसी एक चीज़ से अटैच नहीं हो। किसी एक चीज़ से अटैच होना प्रॉब्लम है, अगर सब चीज़ से आप इन्वॉल्व हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आदमी का प्रॉब्लम क्या होता है कि आदमी सिर्फ एक या दो आदमी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, बाकी चीज़ में वो सेलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट जिसको कहा गया है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ने अपने बेटी को ये कहा कि आप ये मत करना, किसी को ऊपर ही अगर आप किसी को लुक डाउन करोगे तो आप उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहोगे, है ना। अगर जैसे लुक अप करोगे तो भी आप उसको टांग के रख दोगे। तो यही कहने का तात्पर्य यही है, ठीक है। आप अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो ज़्यादातर मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन पिच होता है ना एक बार, और ऑडियंस के हिसाब से उनको जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए कोई पॉइंट कोई वीडियोस में रहता है, कोई वीडियोस में नहीं रहता है। और गुरुजी का तो मेमोरी मुझे नहीं लगता है कि उनको वो फ्रेशली आंसर करते सब दिन, मुझे ऐसा लगता है। Tools. Otherwise, probably a colony of ants or a pack of dogs could dominate human species. But we can use tools. The power of tools is such. Right now, if I ask you to unscrew a little screw in this furniture, you may lose all your nails, it'll not come out. You may lose some of your teeth, it'll not come out. If I give you a little screwdriver, it'll come out. So similarly, to handle the inner dimensions, there are tools. These tools, this is the USP of this country, which is all messed up right now, that people have not presented it properly. If I give you tools for transformation, the only thing is to learn to use the tools, that's all. You don't have to believe any philosophy, you don't have to adhere to any ideology, you don't have to look heavenward because you don't know in which direction it is. People are looking up. After all, you're sitting on a round planet and the damn thing is spinning all the time. If you look up, you're inevitably looking up in the wrong direction.